Good afternoon, all the participants. In this session, we are going to discuss about tour operations in adventure tourism. So, how the itineraries are prepared for adventure tours and how they are executed. What are the challenges and difficulties are there in executing adventure tourism tours, as well as what are the opportunities, what are the career options in adventure tourism. Uh, and to explain all these points, we have with us Mr. Rakesh Jain. Mr. Rakesh Jain is a experiential leadership coach at Outdoor Learning Resource Private Limited, Indore. He's also a trained mountaineer, explorer, and photographer. He has done his mountaineering certification course from ABVMS Manali and involved in various adventure sports for almost 2 years, for almost 20 years, and also has climbed 21,000 feet height peaks and done various expeditions. Mr. Rakesh is designated as Secretary of Outdoor Adventures and Environment Institute since 2000. He also writes various columns and articles in newspapers regarding natural attractions, uncommon picnic places, off-grid destinations, safety and environment awareness in Madhya Pradesh. Mr. Rakesh has organized various adventure camps, corporate workshops in different regions of India, and he also offers comprehensive range of workshops on team building, stress resolution, creative thinking, leadership, etc. He has been awarded as Best Adventure Activity Promoter of Madhya Pradesh for consecutively for 2 years. He has also been awarded as Best Adventure Organization for 2016 and 17. His area of specialization are team building, leadership, OBT, and also customized workshop on the soft skills. With this introduction, I request Rakesh sir to please start his session. Yeah, thank you, Rohit, for this wonderful, you know, introduction, and welcome everybody over here. So let us start the thing. Let me share my screen to you, and I just want that everybody should be, very interactive and very talkative in between, and be with me with the chat and all. So, are you excited, everybody? Please write down in the chat box so that are you exciting to go through this journey, adventure journey, so called. Just write down in chat box. Yes, Anuji, thank you. Yes, that's it. Because we are talking about the adventures, and without participation, you cannot enjoy the adventures. Okay, Doctor. Yeah, Ajit ji, thank you very much. Thank you very much. So let us start the journey, and wherever you feel have some question or something, you just stop me over there, and we'll have the question and answer in between as well, and as well at the last. Okay. So thank you for your participation. Okay, let us move to the adventure journey. Okay, so in front of you, there is one beautiful picture and a beautiful, mountain and a beautiful one photograph, and it is captured by me only. कहाँ का है किधर का है, that I will tell you later. If you ask question, then only I will give you more information. Otherwise, I will just go through the slide by slide and the session will be end. Okay. So you can, meantime, you can stop me anywhere, because the more the participation, the more we enjoy the thing. Okay, so let us start the journey. So what is adventure, tourism? So maybe anybody have done any kind of adventures over here? Just write down in the chat box any kind of adventures you have done till now. Any kind of adventures? Yes, sort of. अगर किस तरह का adventure किया आपने, please बताइए. कहाँ का photograph? Somebody is low shutter speed. Yes, definitely pictures. Yes, skiing, rubber rafting. Oh, wonderful. Paragliding, parasailing. Great. People are there. Great. Only thing is that Manali जाना है हमें adventure पर. Yes, ये basic mountain skiing. Lot of, oh, great. So many adventure people are there. Fantastic. So might be जॉर्बिंग भी किया हुआ है, ट्रैकिंग नियर गोरीचर रेंज अरुणाचल. वंडरफुल सर. यहाँ पर तो ट्रैक एडवेंचर की बताने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ तो बहुत सारे लोग एडवेंचर्स वाले ऑलरेडी है. रोहित जी, क्लिफ जंपिंग, दैट्स वंडरफुल. सो दैट्स ग्रेट. There are few people are less experienced than me. There are few people more experienced than me. But only in the adventure we share each and other experiences. So no need to tell about the adventures and all. So these are all of the adventures. Somebody asked me the photograph of the before this slide. This slide photograph. So this is basically I captured at during my Chadar trekking expedition in the Leh, and it is a slow movie
photograph, and I taken by the mobile only. Camera is my DSLR Canon camera, but with the mobile only I taken this light. We'll talk about it later. Okay, so this is all. So adventure, how the adventure is different from the travel. We call it adventure as a sports. क्योंकि ट्रेवल में क्या होता है, ट्रेवल में पीपल गो ओवर देयर एंड आइटिनरी इज फिक्स, पीपल गो देयर, hotels are fixed, itinerary is fixed, food is fixed, and everything is okay. But then adventures, just like football and cricket, we play in a team. Travel can be solo, travel can be in a group, but in adventures we go in a team. Without team, adventure cannot be possible. Yesterday only one girl come to me and she's saying that she's a solo traveler. Solo traveler is okay, but solo adventure can never be happen, because adventure with the safety, adventure is only happening. Otherwise, without safety, it's a stunt only. So don't do stunt, don't promote stunt, and don't people let them stunt. Go with the adventure. Adventure is always with the safety as a priority. So let us have some definition of the adventure. The activity that comprises thrill, uncertainty, sometimes just unusualness, enthusiastic, जिसमें आपको भी मजा आना चाहिए, and exciting experience. But and further, courage is doing what you are afraid of. This is adventures. I repeat, courage is doing what you are afraid of. जिसमें डर लगता है वही एडवेंचर है. जो अदर देन कॉमन है, दैट इज एडवेंचर. आजकल लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ एडवेंचर. सो लेवल्स आर डिफरेंट. सो विच इज मनाली जाने के लिए पीपल कैन नॉट आस्क यू कि हम जाएं या ना जाएं, लेकिन एडवेंचर करने पीपल आर आस्किंग यू कि हम करें या ना करें, एंड दैट इज एडवेंचर इन माय डेफिनेशन, वेयर पीपल वांट सम एक्सपर्टाइज गाइडेंस, व्हेन पीपल वांट समबडी टू डू इट फॉर देम, दैट इज एडवेंचर. So, okay, meantime, I'll ask some questions as well. So question number 1 is in front of you, because जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा. So write down this question number 1. Which peaks are these? These are very, very prominent peak. I'll give you answer at the end. Okay. So you write down question number 1. It is taken by the me only. Which peaks are these? So take in consideration. At the last, we'll go for the answer of this question, because you have to be very explorer, as I told you. सो एडवेंचर के जो एडवांटेजेस होते हैं, दैट इज द इमोशनल फिजिकल बेनिफिट्स तो है ही है, बिकॉज वी कैनॉट डू एडवेंचर जस्ट फॉर द लीजर, नो सॉरी. एंड एडवेंचर इज नॉट ओनली टू मेक द मनी, नो सॉरी. Adventure is to have the change in the life. It makes changes in the life, in your life as well as the people's life. Okay, so it also improves the problem solving skills. कैसे आप बहुत से लोग इसमें एडवेंचर किए हुए हैं, उन्हें पता होगा how it is going to solve the problem, because in the trekking or in the rafting, every moment is there is some challenges and you have to solve it. It help increase the health benefits, yes. Improve the decision making power, yes, very much. Those who are in a mountaineer or expedition, those go for the expedition, it requires a hell lot of a decision making. It may be right or may be wrong, it doesn't matter, but you have to take the decisions and develop positive thinking, yes. And above all, it's a fun. Agree with me? Just write down in chat box, agree with me, all this, all these points, guys. Yeah, it's fun, yes, definitely it's a fun. It's more than fun. Until unless these all kind of things will be not associated, you cannot deliver the best in the adventures. Yes, thank you, Amit ji, Amandeep ji, thank you, Vijay ji, thank you, Shelly ji, thanks, wonderful. All people are जगे हुए लग रहे हैं मुझे. That's great. That's good. So types of adventure tourism हम बात करते हैं. कुछ लोग तो already यहाँ पर हैं, those who know the adventure, but for the others, there are few, land based, air based, and the water based main segment हम कर सकते हैं. So land based में it's a trekking, zip wire and high rope course, which is nowadays very, very popular in the India. If I talk about the highest attractive adventure in India right now, today date, it's a zip line. Everywhere, all the resorts are making zip line. Everybody, people are going for the zip lining. Sometimes they are going for the tree zip lining. Somebody go for the zip line tours. In the India, Nimrana Fort, in India, there are so many zip line at the, Rishikesh and all. So zip line is nowadays very hot cake. But other than that, trekking, zip line, rock climbing, Sadabahar sports है हमारा, mountaineering for the people like me who want to go for the climb the peaks and heights. आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग, नाउअडेज जहाँ भी आप रहते हैं आपके आसपास काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर्स भी आ गए होंगे. वहां पर दे मेक द हाई रोप कोर्स, क्लाइंबिंग वॉल, मोटर बाइक टूर.
कुछ चीजें हमारे यहाँ नहीं होती हैं, स्नो बोर्डिंग जैसे हमारे एरिया में नहीं है, बट दोज हु आर इन हिमालयस पार्ट दे कैन डेफिनेटली गो, एंड सो मेनी, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल इन दैट लैंड सर्फिंग एंड ऑल. एंड द वाटर बेस, यस वाटर, कुछ कुछ पार्ट में वाटर बेस्ड एक्टिविटीज होता है, वाटर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग और स्कीइंग, स्नॉर्कलिंग, houseboat stay. This is also you will call it adventure because which is unusual. It's a adventures. Okay, boat safari, surfing, canoeing. You can also add something if I miss over there. Yeah, there are so many things, and every day, every month there is some new adventure coming up. They pop up. New Zealand, we call it the hub of the adventure. They generate a lot of things. Zorbing they invented, and now it everywhere is flourished. Then airbase, paragliding, parasailing, skydiving, hot air ballooning, paramotoring, and so many, even so many things are there. So this is yeah. Anybody say something? Okay, fine. So let us move. And so differentiation of activities अगर हम करते हैं तो दो एक्टिविटीज हम लोग बात करेंगे. एक सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, देन एक हार्ड एडवेंचर एक्टिविटीज होती है. Soft adventure activities like backpacking, like bird watching, camping, canoeing, ecotourism, fishing, hiking, and all this, जिसमें low risk factor होता है. Okay, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है, एंड easy going काम हो जाता है, but it doesn't matter that it's a damn easy. You require expert for that. Okay, you are not expert, that doesn't matter, but those who are doing that, like backpacking, those who are conducting for you, they have to be expert in that, already. But it's a low risk factor. And few other activities are there which is having a hard activity, which are having a high risk factor, like mountain climbing, rock climbing, ice climbing, then skydiving. Sometimes para sports I treat as a hard activity because risk factor is always there in the para sports. And somehow in the water sports also there are some times of risk factors also there. So you can choose which kind of activity you want to go for, the hard activity and the soft activity. These are the definitions of mine. You can elaborate in the medium level also, and because there is the thumb rule, it's all thumb rule. Adventure is very initial stage in India. So जो कह देगा वो सब सही हो मान लिया जाएगा. ओके, सो डिस्क्लेमर ओवर देयर, ये जो भी है सब कुछ मेरा अपना खुद का है. इसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपने डेटा फीड कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो any authentication in that as good as the travel industry, जो tourism travel industry. उतना ज्यादा एडवेंचर टूरिज्म अभी इंडिया में इतना सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है. सो अच्छी बात है, अभी बहुत इसको बचा है इसके अंदर. So India as an adventure tourism destination internationally, there are few places in India like rock climbing and mountaineering. Of course, Himalaya is a good place, or Sahyadri is a good place for the rock climbing pitches. And rafting, bungee jumping, and trekking across India nowadays, trekking are there, but we generally do in the Himalayas. वो ट्रैक किस काम का जिसमें बर्फ नहीं दिखे, हिमालयन पीक्स ना दिखे, राइट? सो दैट इज माय, मैंने पहले कहा डिस्क्लेमर, इज माय ओन विश. आपकी विश को किसी को होती है, किसी फॉरेस्ट ट्रैकिंग होता है, किसी का कोस्टल ट्रैकिंग होता है, आप वो कर सकते हैं. And then skydiving and skiing, there are few Kamshet में skydiving अच्छा था. Beer Billing is a fantastic location for in India for internationally renowned for this gliding and all. So now the question number 2, identify this place. It's a beautiful place, and if you want any kind of hint, I can give you the hint. If you any option for this, any option, just write down in chat box. Any yes, good. Roberts Cave, great. Manali, right. सही आंसर क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा. गुड, अरे वंडरफुल. बहुत लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, मजा आ गया. Great. So okay, now going to the again water-based activity in India, land-based and air-based. So maximum people are interested in the land-based activity because it is having a low risk factor. Water-based, of course, it's popular nowadays in India, like water highway of India, very well. It's a Rishikesh. So lot of water activity over there. Even in the Maharashtra also, there are few water rafting people are there. They are doing it. Even in MP, we have at Orcha, and जहाँ पर भी streams अच्छी हैं, rapids हैं, वहाँ पर water rafting हो जाती है. But then to 38% is the only water base in India. Land base maximum 50 and air base 7.4. So maximum the people are going to, if you want to start your company, if you want your student want to start a company, so start with the land base. So it has a few of the like tracking and something. We'll go in a later stage.
that how we are going to plan the itinerary and all. So this is how the bifurcation over here. Sorry. Yeah. So again, the world best countries for adventure tourism. Best is like the dark green over here. It says Canada and the upper part of the world, and the Australia and New Zealand. India is somewhere between middle green. Maybe yes, we have the initial stage of the adventures. Not very high, not very low, but कम लोग खाते हैं, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर इसका स्कोप है. सो स्कोप इज इमेंस इन इंडिया. दोज हु ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, वहाँ स्कोप बहुत कम है, लेकिन दोज हु आर इनिशियल स्टेज like in the Africa, it's a very less scope. But nowadays people are going for the climbing the Kilimanjaro and the Mount Kenya and Masai Mara and Mombasa, and to see the great the transit. So people are moving over these places. Okay, so top 10 countries for the adventure travel in India is ranked in 2020. This is sourced by the ATDI. Iceland is number 1, Switzerland, and so these are the all developed country. And in developing country, Czech Republic and Chile, and they are among the number 1. And the question arises, where is India? Where is India in the developing country? Where is India lies in the adventure tourism? These are the only data is covered, taken by the ATDI, sourced by them. And now over here is the developing country, and India over here, see, this is 96th position. And last year it dropped by 10 position down. So I take this down position as a challenge for us. If we are so low in the adventure tourism in world, it means there is immense possibility to grow, right? So India is 96, so we have immense possibility to go. So adventure tourism having a vast scope in India nowadays. Are you agree with me, guys? Just write down chat box. Are you agree? Yes, no, and no, yes. somebody क्वेश्चन आंसर हम लोग अभी बीच में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आखिरी में भी आप क्वेश्चन अपना प्लीज पूछ लीजिएगा ताप्ती जी. हम लोग क्वेश्चन आंसर लास्ट में करते हैं, तो मैं आंसर दूंगा. एंड यस, प्राइस इज आल्सो फैक्टर. दैट्स फैंटास्टिक. प्राइसिंग, यस, इंडिया में प्राइसिंग अच्छी है. ओके, इंडिया डिस्पाइट 70% ऑफ द हिमालयस इन इंडिया, अराउंड 7000 किलोमीटर ऑफ coastline. India have both hot and cold deserts. Agree? Yes, it has a Thar and as well as Himalayan, Leh. Ranked 10th in the total area under the forest cover, 6th in the terms of number of recognized UNESCO natural heritage site and variety of flora and fauna. और क्या चाहिए एडवेंचर्स के लिए बॉस? और क्या चाहिए, कितना चाहिए? सब कुछ तो है हमारे पास में. ओनली सिस्टम हमें चाहिए, आप जैसे लोगों का साथ चाहिए. Those who are teaching the people the adventure tourism. So make this adventure tourism as a curriculum, not as a part of, not just as a subject. Make it a part, whole part. I've tried many times. I have approached many politicians for that, to make adventure tourism a separate tourism policy, not as a tourism. Adventure tourism is not a tourism. I call it adventure is a sports. It has a different kind of people, different kind of nature. It's not a ghumna firna. It's something different. So you people can help me in that, to develop this adventure tourism policy in India, special adventure tourism policy in India, in state wise. In few states there are policies, but few states like MP, there is no adventure tourism policy, and people don't know how to go ahead. So हो सकता है कल आपके पढ़ाए हुए बच्चे कल कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए और वो जाके कुछ एडवेंचर टूरिज्म की पॉलिसी बना ले, तो सबका भला हो जाएगा. Now the question number 3, which what is this? ऐसा nowadays very common. जो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक्टिव हैं, उनके लिए पिक्चर बहुत कॉमन, बिकॉज ये पिक्चर इसी टाइम का है, ड्यूरिंग दिस केदारनाथ. नो, इट्स नॉट केदारनाथ. आई गिव यू द आंसर एट द लास्ट. मैं लास्ट में आंसर दूंगा. यस, मैं आंसर सही नहीं बताऊंगा. कुछ लोग आंसर सही दे रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, बट ओके फाइन. नाउ सो जॉब अपॉर्चुनिटी का हम बात करते हैं एडवेंचर टूरिज्म में, देन ऑर्गेनाइज टूर ऑपरेटर्स की जो है, ये 2016 के डेटा है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा मिलते नहीं है. 1000 के आसपास में ऑर्गेनाइज टूर ऑपरेटर और अनऑर्गेनाइज 1600 है, लेकिन आज की तारीख में ये कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं. एंड अनऑर्गेनाइज्ड पीपल आर बहुत सारे हो गए हैं.
इनफैक्ट कॉलेज में कुछ पढ़ रहे हैं दोस्त लोग, उन्होंने मिलकर अपनी कंपनी बना ली, लेके अपने क्लास वालों को पहले लेके ट्रैकिंग पे चले गए और धीरे धीरे उन्होंने कंपनी बना ली एंड दे फ्लरिश, स्टार्टअप बिजनेस कर लिया। सो बट यस, उसके कुछ सेफ्टी पॉइंट्स से हम आगे आते हैं, उस पर बात करेंगे कि जो सेफ्टी, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग नहीं होती तो फिर कुछ मिसहैप होता है तो प्रॉब्लम होता है। सो एडवेंचर इज रिक्वायर लॉट ऑफ सेफ्टी एंड लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, पीपल का काम है वो, ऐसे ही नहीं है। सो ओके, देन जो इसमें अगर हम करियर की बात करते हैं, सो लैंड बेस, एयर बेस एंड वाटर बेस टूरिज्म तो है ही इसमें, तो लेकिन हम इसको कैसे बनाते हैं, मोर देन एडवेंचर टूरिज्म को हम कहाँ आगे लेके जा सकते हैं। सो रिमेंबर दिस स्लाइड एंड यू नो, as a instructor one can be a part in that. As an instructor for the adventure tourism, either you have your own company or you can be part of the adventure instructor, maybe licensing officer, maybe for expeditions. So दोनों काम होते हैं। एडवेंचर करने वाले, अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो नहीं कर सकते, नहीं सर्वाइवल हो सकता है उनका। दे हैव टू डू एट देयर ओन adventures, they have to love their own adventures, they love nature. So they can be the instructor, they can be a travel consultant. Okay, nowadays people are asking क्या कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करना है, एडवेंचर करना है, so they can be a travel consultant. Then they can be a mountaineer earning a lot. Once you climb some peak, Everest or something peak, then people are after you. You can be a role model for them. You can be a flag honor for them, their company, and you can act as a model for them. So many people in India, they are just become mountaineer and they become famous in the world. Now tour managers, yes, you can be a tour manager. Then you can be a diver, you can be a guide, you can be a blogger, you can be a tour operator or adventure park builder. You can build the adventure parks and all. And photographer, yes, of adventure tour photographer, you can be the adventure tour photographer. And the outbound trainer, like me, I started my journey as a adventure person, adventure loving person. Then I have done my courses. Then I, after my BE and MBA, I'm become the outbound trainer. Now I'm teaching the people, the corporate people, the team building with the through the adventures and the experiential activity. So this is the how you can grow, and the people will get the benefit of your own expertise. So essential element for the adventure is not only the fun, it should have the nature element in that. Nature should be there. It should have the experience with that. If there is no experiences, then it is not adventure tourism. You should include one nature part in that. You should include one experience part in that. You should include one culture part in that. If there is no cultural change in there, if people are not experiencing their local culture, then it's not adventure. So you have to include the culture part. You have to do some activity part in that, maybe rafting, maybe climbing, maybe rock climbing, maybe zip lining, any kind of activity if you can add in that. And it should have the impact on the ecotourism. It should have impact on yours and the others also. So these are essential elements. So whenever you plan some itinerary, so please mention all, try to mention 2 or 3 or 4 or all in your itinerary, then it becomes a fantastic adventure itinerary. And what is the traveler experience of that? It should be novel and unique. If it is common, then there are so many players to work on that. It should have the transformation from a traveler to adventure tourism, from a natural people to the adventure lover to the nature people lover. It should have the challenging capacity. It should increase the challenging capacity of the person. It should have the wellness. People are going in the adventure for the trekking and all, and they are doing experience yoga, meditation, and everywhere, and should have the impact in the both the ways, in your life and the other's life. So these elements include, and this is the traveler experience should be matched with that. So it becomes a complete one good or best adventure itinerary. So try to manage all the things in your itinerary. So let us have what are the essential things to make some itinerary preparation before making any itinerary. Okay, so manpower. So what kind of manpower you are looking for? Suppose if you want to plan an itinerary for the rafting or mountaineering or for some wildlife sanctuaries or anything, you have to look for the best manpower available for that. Either you
You yourself should be trained, or hire somebody, or hire the people who are already trained. So manpower is the very essential part, because it's a customization and the safety over there. So machines cannot be bugged, only manpower can be bugged. Manpower should be is the key element to this, adventures. And sometimes activity specialists, maybe rafting people, maybe mountaineer, maybe some other. Then first aid specialist, because as adventure over there, so रिस्क फैक्टर काफी बढ़ता है, हो जाता है. सो फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट आपको होना चाहिए इसमें. नॉट वेरी हाई, बट चाहिए होता है. कई बार फंस जाते हैं. आई हैव द लॉट ऑफ experiences associated with me for this first aid and all. Then basic equipments. You should have the basic equipments along with you if you want to have a company, or maybe those who are having. I share one experience, like in the Chadar trek. I was there. 2 times I had done the Chadar trek in the Leh, and people don't have a basic equipment, and they are arranging the Chadar trek for the people. So it's horrible. They don't know what are the equipment best for the Chadar in the -40 temperature. So basic equipment, you should understand what is the basic need of the equipments. Then the tour manager qualification, whether he is a basic ed certificate, or maybe a qualified mountaineer, or what are the experiences over there. Either do it yourself, assign some agency to do it for you. This is the best way. If you don't know the adventure much, assign a good agency, good people, and give the complete package to them. But you should experience this once. अगर आपको ट्रैकिंग का आइटनरी करना है तो एक बार ट्रैक पे तो जाओ बॉस. आप नहीं जाएंगे ट्रैकिंग पे, यू कैन नॉट सेल दैट ट्रैक. ओके, हाँ, मनाली का अगर आइटनरी आपको बेचना है तो यू कैन सेल मनाली. लॉस एंजलिस का आइटनरी बेचना है, विदाउट गोइंग लॉस एंजलिस यू कैन सेल इट. But without, you want to sell the trekking is everywhere in the world is the same. Only terrain is different, height is different, level is different. But you have to experience the trek, how to live in a tent, how to live in a sleeping bag, how to eat the food over there, how to negotiate the mountains, how to negotiate the high altitude sickness and all. So and so. So plan an itinerary. So first, take the objective. It's a land base, air base, or it is having a water base kind of thing, activities. Okay, or it is a mix. Sometimes it's land and air base, like if I'm talking about the Manali. Sorry, somebody is asking something. Yes, specialists are the tour manager, are the part of the manpower. Yes, but manpower, sometimes licensing people are already there. Those are not the specialists, because अगर मैं बात करूँ मुंबई से हमें मनाली लेके जाना है, so मनाली ऑनवर्ड्स स्पेशलिस्ट से काम शुरू होता है, जहाँ पर ट्रैकिंग रॉक क्लाइंबिंग चालू होती है. लेकिन मनाली टू मुंबई टू मनाली हमें कोई मैन पावर चाहिए जो लाइजनिंग करेंगे, लाइक दिस वे. दे आर पार्ट ऑफ इट. ओके, महादेव उत्तराखंड हाईएस्ट लॉर्डशिप. Yes, it's I tell you in the later. Yeah. So objective first, define the objective of the people, then plan, then level. Are they go for the beginner level, or they are intermediate, or they are advanced level? So what kind of the participant you, अगर कोई मनाली जाने की बात कर रहा है तो हम उनसे नहीं पूछते हैं आप कितना आज तक कितना ट्रेवल किया हुआ है. लेकिन अगर एडवेंचर करने जा रहे हैं तो we talk to them that which kind of adventures they want to go for it. Are they want to go for a easy tracks, or intermediate track, or advanced level track? Okay, we have to talk to them. We have to educate them for the adventures. मतलब मैंने कई केसेस देखे हैं इसमें. लोग आते हैं, चादर में ही देखा था मैंने. लोग आते हैं, कहते हैं, जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफ देख के बड़े एंथू में आ जाते हैं कि हम भी ऐसे फोटोग्राफ खिंचाएंगे, पानी में जाएंगे, -40 में रहेंगे. लेकिन वो सिर्फ सुन करके देख करके आ जाते हैं, और वहां करके फिर उनको कैरी करके वापस भेजना पड़ता है, रास्ते से गाइड के साथ भेजना पड़ता है, एंड बहुत उनका प्रॉब्लम होता है. ओके, सो एजुकेट योर क्लाइंट फर्स्ट बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ tour planning. Educate them first. Okay, then how many person, number of person. So yes, it is also depend on that, क्योंकि आइटिनरी आपकी पूरी इस पे डिपेंड करती है. 2 लोगों के लिए हम कोई ट्रैकिंग कैंप, अगर मान लीजिए हेमता पास का ट्रैकिंग कैंप या चादर का करना चाहते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा. सो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, एज फैक्टर क्या है. समटाइम्स पीपल आर कमिंग विद देयर फैमिली. सो बड़े लोग होते हैं, बोले हम तो इतना दौड़ते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम तो 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं, और 55+ साल के हैं. हम जितना दौड़ते हैं हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं हिमालय पर.
नो बॉस, सॉरी, दिस इज नॉट ट्रू। दौड़ना एक अलग है, साइकिलिंग करना एक अलग है, चलना एक अलग है, और हिमालय पे या किसी भी माउंटेन रेंजेस पर किसी भी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आई एम नॉट ए रनर मैं दौड़ता नहीं हूँ। मैं दौड़ता हूँ तो आधा किलोमीटर में थक जाता हूँ, और मेरे साथ में जितने लोग हैं वो सब दौड़ने वाले 42 किलोमीटर्स, इवन 111 लद्दाख की भी की हुई है। वो हमारे साथ में एक बार ट्रैक पे गए, लोकल ट्रैक पे गए, इंदौर के आसपास ही ट्रैकिंग पे गए, और वो वहां जाकर के एकदम से थक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप क्यों नहीं थके हैं, और वहां तो आप आधा आधा किलोमीटर थक जाते हैं। मैंने कहा दोनों के चांसेस का फर्क है। यहाँ मैं करना चाहता हूँ, वहां मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। ये मेरा शौक है, वो मेरा शौक नहीं है। तो अगर आप बहुत अच्छे वॉकिंग करने वाले हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करने वाले हैं, तो नॉट नेसेसरी आप ट्रैकर भी अच्छा बनेंगे, आपको ट्रैकिंग को भी लव करना पड़ेगा। सो बोथ आर हैविंग डिफरेंट। यस, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काम आती है, लेकिन एज फैक्टर एंड आपका जो लव फॉर द एडवेंचर है, पैशन, वो भी काम आता है। देन ग्रुप किस तरह का, मेल एंड फीमेल ग्रुप है क्या? क्योंकि होटल में तो हम एक अलग से कमरा दे सकते हैं, लेकिन अगर हिमालय पे लेके जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, एक अलग से टेंट देना है किसी सिंगल गर्ल को, अगर एक ही गर्ल है उसमें, और टेंट गर्म नहीं होते हैं तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो टेंट विल बी हीट अप विद द बॉडी हीट इन द टेंट, इन द टेंट्स। सो वो भी हमें फैक्टर ध्यान में रखना है कि मेल फीमेल कितने हैं, एटलीस्ट 2 फीमेल्स हों, या नहीं तो कोई इंस्ट्रक्टर फीमेल हो, सो दैट दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड दे कैन शेयर द टेंट्स। अभी लग रहा है कि चीजें बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत बार ये इम्पैक्ट करती है आइटिनरी बनाने के लिए। सीजन, समर सीजन है अभी, तो इंडिया में ट्रैकिंग ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर हो रही है, राफ्टिंग भी ऑलमोस्ट काफी टाइम चल रही है, बंजी जंपिंग भी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर होते हैं, पैराग्लाइडिंग, ऑल स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर होने लग गए हैं। सो बट देन टू बिफोर डूइंग एनी आइटिनरी प्लान, go for the summers. It's a monsoon. Monsoon में कुछ tracks like in the Maharashtra, there are so many tracks in the monsoon. Okay, we especially go for that in the like Valley of Flowers in the monsoon only, क्योंकि तभी वहाँ पर फ्लावर अच्छे से होते, ब्लूमिंग होते हैं। सो डिपेंड ऑन द टेरन ओनली। विंटर है तो अभी चादर ट्रैक है, या कुआरी पास का है, या केदारगंज के बहुत सारे ट्रैक्स हो रहे हैं, एक्सपीडिशंस हो रहे हैं, राइट? Okay, that's all this. Then quality of the itinerary, are the people are going with you, are they going economy, they won't go for economy, medium class or luxury class? Like if I'm talking about the trekking, like we go for the 10 days trek or something, like somebody want backpacking, easy going backpacking and not very high quality kind of stuff, but sometimes it's medium, sometimes foreign clients are there, then they go for luxury, they want table kursi लगा के खाना खाना हम लोगों को हिमालय पर। क्या करें, चाहते हैं तो देना पड़ता है। कॉस्ट, टेक द कॉस्ट, अर्न द मनी, नो प्रॉब्लम, अर्निंग द मनी, नो प्रॉब्लम। और सुनील जी जा रहे हैं गोइंग फॉर केदारगंगा ट्रैक आफ्टर टू, दैट्स फैंटास्टिक सुनील जी, फैंटास्टिक। इस बार आपको बहुत जबरदस्त बर्फ मिलने वाली है वहां पर, एंड जुड़ा का तालाब इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस व्हाट आई से इन द वर्ल्ड। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। देन मोड ऑफ ट्रेवल क्या करना है हमें, बाय एयर जाना है, बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बट एक लिमिट तक ही हम इससे जा पाते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन द माउंटेन व्हीकल्स, मे बी मैक्स जो छोटी गाड़ियां होती है, टेम्पो ट्रेवलर। सो इट इज ऑल्सो टेक द कंसिडरेशन इन योर आइटनरी। समटाइम्स जो ट्रैकिंग का होता है या जो मेन एडवेंचर्स होते हैं, उससे ज्यादा कॉस्टिंग इन सब की पड़ती है, बट दिस ऑल कॉस्टिंग कम इनटू योर कॉस्टिंग की एडवेंचर महंगा है। नहीं भाई, आप एयर से जा रहे हो इसलिए महंगा है, आपको फैसिलिटीज चाहिए इसलिए महंगा है, अदरवाइज डोंट हैव द मच कॉस्ट, बट यू शुड कंसिडर इन दैट। And that medicine level, I already discussed the doctor certificate took part in that। आपको राहुल बोथ आर गोइंग टुगेदर, गुड। दो लोग, सुनील जी भी जा रहे हैं एंड राहुल जी भी जा रहे हैं केदारकंठा के लिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, फैंटास्टिक, प्लीज शेयर योर पिक्चर्स विद मी, राइट? सो अगर मेडिकल लेवल है तो समटाइम्स अस्थमेटिक लोग होते हैं, दे वांट टू गो, ब्लड प्रेशर लोग होते हैं, दे वांट टू गो इन सम काइंड ऑफ yes, Kinnur Kailash is fantastic. Kinnur Kailash is also very good trek. It's a moderate trek. देखिए कुछ ट्रैक, जैसे केदारकंठा ट्रैक की अगर मैं बात करता हूँ, काफी लोग जा रहे हैं उसके अंदर। केदारकंठा अगर हम समर्स की बात करते हैं, समर में इट इज इजी ट्रैक, ओके, बिकॉज देयर इज नो मच स्नो ओवर देयर। बट वही ट्रैक अभी विंटर में थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर। सो वी कैन नॉट डिफाइन एनी ट्रैक इज इजी और टफ, ओनली द वेदर डिफाइंड इट इजी और टफ, एंड द पीपल along with you it define it's easy or tough. Dongri Gochala, like in Sikkim. Yes, I have done this Dongri in Gochala in 19. I have done this track. It's amazing. Don't miss that. And वहाँ से जो कंचनजंगा का है,
It's amazing view hai, amazing view hai. All the best Anuj ji for your Zongli and Yozel attack. Okay. So first aid, you have to have the basic first aid along with you, and the fitness level बहुत important है जो check करना चाहिए आपको हमेशा. Then like हम लोग अभी मई में जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, तो उसका हमने अभी से हमारा ग्रुप बना दिया है, इसमें हम लोगों को ऑलरेडी अभी से फिटनेस की हम लोगों को टिप्स देना शुरू कर दिया है. You have to, again I am telling you, you have to educate your client for doing any kind of adventure, otherwise they will so please share your experience of चादर ट्रैक, especially the medical condition. Okay राहुल जी, मैं लास्ट में करता हूँ, वो एक बहुत लर्निंग भी है, सबके लिए भी लर्निंग रहेगा. I'll definitely share my experience, चादर experience at the end. राहुल जी प्लीज मुझे आप बता दीजिएगा. ओके. एक मैं एक्सपेडिशन, एक आइटिनरी हम प्लान करते हैं जो हम लोग जा रहे हैं ऑलरेडी. सो एक पता लग जाएगा कि आइटिनरी किस तरह से प्लान करने वाले हैं हम लोग. ये हमारा एक ट्रैक है जो गज पास का हम लोग जाने वाले हैं. व्हाट इज द एरिया इज धौलाधार हिमालय. वी जनरली गो इन द ऑफ टेरेन ऑफ off the beat destination. Nobody knows about these places. I myself go and do the one recce before going, and then we plan it. So this is just a sample itinerary how we are doing it. So it's the Dhauladhar Himalayas, 5 to 13th of May. Easy. Its altitude is 3,350 meters maximum altitude, and total trek distance is 32. This is the easy trek for the families and all. Okay. Then some highlight, it will be having snow, it will be having glaciers, forest, meadows, river, birds, and great views Himalayan peak. See, अगर ट्रैकिंग है तो ट्रैकिंग में हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ट्रैकिंग camp 1, camp 2, camp 3, base camp, and going and coming back. So it's a long program. It's a 10 days long program. Okay. And some information of the district of the Kangra, what is Kangra, and something, detail about this terrain. It's near McLeodganj basically. So this is the some itinerary. It's a 6 night, 7 days trek. It's from Pathankot to Pathankot. From Indore to Indore, it's somewhere around 9 night, 10 days. So day 1 is arrive Pathankot, transport to Bontu village near base camp. It's 1850 meters. It's 3 hours journey and 85-kilometer journey. It's by the vehicle. So from Indore or from Mumbai, we are going some few of the people are going by air till Delhi. From Delhi onwards, we are taking a train to the Pathankot. So it include train, it include flight, and then it include the local vehicle. So all the mode of transportation we are using in there, and it all come into the itinerary part, costing part. Then day 2 is acclimatization day around. This is the most important thing. People are generally, forget to do the acclimatization in the Himalayas, and then they suffer with the high altitude sickness problem. जितना भी आइटिनरी TTH है या ट्रैक द हिमालय है, या बहुत सारे मैं आइटिनरी देखता हूँ लोगों की, कुछ लोग हैं जो सीरियसली ट्रैकिंग करना चाहते हैं, करवाते भी हैं, एंड दे टेक दिस acclimatization डे. उससे क्या होता है, दिन एक बढ़ जाता है, कॉस्टिंग में बढ़ जाती है. So to go and lower cost, they skip this day. आज पहुंचे और कल से ट्रैकिंग स्टार्ट. That is not recommended, and I believe that you should also not recommend it. So you have to adjust from the high altitude terrain. हम दिल्ली से हैं, हम ग्राउंड बेस से जा रहे हैं, and then we are reaching to 2000 मीटर हाइट पे जाते हैं, तो हमको बॉडी सिकनेस लग जाती है, तो हमको वहां पर अपना बॉडी का एक्टिवेशन करना चाहिए. एक दिन का रेस्ट वहां हमें देना ही चाहिए. जो लोग फ्लाई करते हैं दिल्ली से ले के लिए फ्लाई करते हैं, आपको पता है वो वहाँ जाकर या तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या उनके मुंह से खून आना, या 2 दिन वो कमरे के अंदर बंद करके बैठे रहते हैं और कहते रहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा. व्हाट इज द अच्छा नहीं लग रहा? So sometimes their body is not acclimatized to the height. So we have to take this day. So in this second day we are taking to the some nearby to villages, तो हम वहाँ चले जाते हैं. Then day 3 we go to trek to base camp, to camp 1 to the forest. It's a 5-kilometer trek. It takes 3 hours journey, approximate 3 hours journey. The day 4 trek to camp 2 and Bagga. It's around 2400 meter. It's having 5 to 6 kilometer. Then 4 hours journey. And every day meals will be there, every day tents will be there, every day sleeping bag will be there, and few activity will be there. Maybe sometimes river crossing, maybe sometimes rock climbing, but it's not sure that we can do. It's all depend on the weather. Then day 5 we go to the snow line and beyond, and then come back. Not necessarily that we could cross the Gaj Pass, because it's all depend on the weather. Agar acha milega, then we can cross the Gaj Pass. Otherwise we'll go touch the snow, enjoy the some feeling, and then we'll come back, because it's an easy trek for the family. 5 years to 70 year people can join that. Then trek to again base camp, and then same back departure to come back to Pankot station, and then Delhi, and then they go further their own places. So you should include what it includes, what it excludes,
personal equipment for the trek. We give them sleeping bag, we give them personal tents and the mattresses and the sleeping and the rucksack as well. So few companies are giving rucksack, few companies are not giving the rucksack. So it's all depend on the company and company. Then what are the medical facilities over there? Then what are the safety measures one is taking over there? And what is the cancellation policy? तो cancellation बहुत होते हैं adventures में. आज 4 लोगों ने मिलकर के बात कर लिया कि जाना है, ट्रैक करना है, वगैरह वगैरह कर लिया. बाद में मूड किसी का चेंज हो गया, वो कैंसिल हो जाता है. So you should have a very strong cancellation policy. Fine. So this is how one itinerary is already there. So now the question number 4 arises: highest motorable road in the world. Yeah. Good afternoon. Highest motorable road in the world. Don't Google it, please. Anuj Bhattacharya, fantastic to love you. Yeah, you have wonderful information at your fingertip. That's fantastic. खारदुंगला पास जयदीप जी नहीं, खारदुंगला पास अब नहीं रहा है, उससे भी 2 आगे जा चुके हैं. आप गूगल कर लेंगे, कर लीजिएगा, पर मत कीजिए प्लीज. गूगल अपने दिमाग पे यूज कीजिए. वी विल कम बैक फॉरवर्ड. ओके. सो I want to be the expert in the adventures. So there are few levels of the courses are there. BMC is a basic mountaineering course. If you want to go for that, basic mountain jo hai, then you can go for advanced mountaineering course. This is for the mountaineers. Okay, this is for the mountaineers, basically for the land sport. This is the topmost, and then we have the MOI method of instructor, then search and rescue, and the few other courses available. So if you want to go for the land-based adventures, one must do at least BMC, at least, or occupy the people, those who do the BMC course, right? And the few other training institute in India, like NIM, very famous, at Uttarkashi, at HIM, Darjeeling, then AP Vimas, then the Jawahar Institute, and then the NIM at the Arunachal Pradesh. These are the few prominent institute in India which gives you the any kind of adventure trainings, maybe water sports, maybe para sports, whatever. And there are other few sports facilities as well. Okay. These are few associations in India or in abroad, international India. India is the Indian Mountaineering Foundation is the topmost. Those who are looking after all this activity, the ATOI and apex body of the adventure के लिए है, and the foreign की कुछ और activities है. कुछ कंपनीज है जो बेस्ट है इंडिया की, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज है, और आजकल तो बहुत सारी हो गई है. एंड एनीबडी कैन से दैट दे आर द बेस्ट कंपनी एडवेंचर, इन नोबडी कैन हैव द फिंगर ऑन देम. So because it is very very unorganized right now. Okay. So few of the equipments, rocks and rope equipment, which you should have the ropes and carabiners, climbing, because to start in the adventure field, start with the track. The easiest way into the adventure, start do the track and have some equipments, so you start loving your activity. Fine. Take some GPS and all. This is at the Mount Shididar, 5326 meter at the Mount peak of the Shididar. I have taken this. And the one request is that please don't use polyethylenes, क्योंकि अगर हम एडवेंचर करते हैं तो हमें नेचर को प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो हम जो करते हैं और जो कमाते हैं उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो मजा नहीं आएगा. सो यू हैव टू गो फॉर दैट. प्लीज एटलीस्ट plant 1 tree every month and follow traffic rule. You have to be disciplined yourself. Then only you can do the best adventures in that, that, and be honest with you. Yeah. And the question number 5, which place is this? Nowadays people are, very much known about these places. So which place is this? Go for that. Thanks for thinking towards nature, adventure, and environment. So मैं आंसर बता दूं? So that's all from my side, Rohit ji. So any questions over there? Because I want to have the more question and answer session rather than having one side communication. Yeah. Yes, sir. Yeah. So let's have the question and answer. So question number 1 was that can you have the answer of question number 1? Anybody can write the answer for the question number 1? I've shown the peaks. I've shown few peaks. Yes, we have to go up a bit in chat. Yes, people are saying Everest, Kanchenjunga, K2. No. That's okay. I'll give the answer. Okay, I'll give that. It's a Chokhamba peaks. Okay, it's a Chokhamba peak. Okay, then the answer to I'll say I show all the pictures, right? Okay, this is the thing. This is the Chokhamba Standard peak. Valley. Yeah, Chokhamba. Yeah,
few people ने बोला था इस Sandan Valley. It's our group only. It's a beautiful. If not visited in your life, must visit the Sandan Valley. It's a very adventurous, very thrilling. क्या है बात कर कि कोई क्वेश्चन आएगा तो बात कर लेंगे. And yes, Brajesh ji, motorbike tourism is nowadays very popular in India, and it's adventure tourism. Yes, it is adventure tourism. Wherever some risk factor is there, it's adventure is already there. Nowadays, bike tourism people are going to touch the Kharlungla Pass few years back. Now it's Umlingla, it's in the Leh, and there are this is nowadays it's a but then जो खारदुंगला पास ने जो तमगा लिया सबसे ऊपर वो अलग ही. Yes, Roberts Valley is like very much clear. Roberts Valley is like looks like this, but it's Sandan Valley. Okay, and if you have any question, please ask me any questions. Yes, guys. Okay, are we open for question, Rohit ji? Yes, absolutely. So, what is the difference between fishing and angling? See, fishing and angling both are the same thing only. Because I'm basically a man of the land, not the water. Okay, So, but fishing yes, actually, angling. yeah, fishing actually Some involves any all type of fishing with the net and everything. But angling is angling is must be done basically with the angle, with the rod, yes, it's a basic and time that is pass it. activity. I'm like trout fishing. Trout fishing in the Tirthan Valley is the best place for the angling. Tirthan Valley or in the Manali also, in the Kullu Valley also for the trout fish. Trout fish is very popular over there. I am vegetarian, okay, so I don't do the angling. But yes, एक एक काला दाला बैठे हैं, hat लगाए हैं, गाना सुन रहे हैं. Have your quality time with you. That's angling. Fishing mass, Yes. fishing is fishing. Yeah. Yes, lot of people think it is kind of meditation also, because you have to have a lot of focus and patience. Yes. Passions. It is a passion. It's a passion. And sometimes people are those who are vegetarian people. They catch the fish and they release again. They are using this kind of therapy, to teach the passion. But लेकिन catch करने में यार fish का गला छिल जाता है. Okay, so that's not fair. मैंने कहा ना, be honest with you. आप वही करो जो प्यार करते हो. नेचर को क्यों वेस्ट करना है यार? उसको रिस्पेक्ट करें. So, but it's okay, fine. Fishy. Sir, kindly give more information about Spiti Valley. स्पीति, यस, स्पीति लेह से मनाली से ऊपर स्पीति चालू हो जाता है. ओके, कारगिल वे इज द स्पीति. देयर आर टू वे. वन वे इज यू कैन ईदर अप्रोच फ्रॉम द शिमला, फ्रॉम काजा विलेज होते हुए आप जा सकते हैं स्पीति वैली. लाइक द लेक आती सम लेक, आई एम मिसिंग द नेम. मून लेक इज बोलते हैं जिसको हम चंद्रन लेक बोलते हैं ऊपर. ओके, चंद्रन लेक सूरज लेक, तो वो है. इट्स बेसिकली स्पीति फॉर द बाइकिंग टूर. मैक्सिमम लोग उसको जाते हैं, बाइकिंग टूर में करते हैं. बट यस, काजा के आगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जाने के लिए. बट इट्स मोस्टली पीपल आर लुकिंग फॉर द एंड इट्स अ कोल्ड डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग. एंड वन वे इज फ्रॉम द मनाली ऑल्सो. रोहतांग पास होकर भी आप मनाली से जा सकते हैं. बट दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल रूट. जनरली पीपल आर मेकिंग सर्कल शिमला से काजा होते हुए, देन दे कम बैक फ्रॉम मनाली. दैट इज द वे. चंद्रताल, Sir, I have a या basic question, sir. या I mean, as you said, more number of people. If now, right now, adventure is a special interest tourism or niche tourism, but ओके. it is slowly becoming kind of mass tourism. Big groups are going. If you talk about any forts in Maharashtra or a lot of places, in fact, in Himalayas also, large Yes, groups in a very high frequency they are going. So yes. don't you think it will have negative impact? So how to manage this? I mean, how to make adventure tourism sustainable? It is giving a lot of impact in the nature. I call it our Himalaya. Okay, it's my Himalaya or our Himalaya. If you respect your nature, then it's yours. If you're not respecting your nature, then it's not yours. I'll tell you one incident. I had done the Rupkund in '96. Okay, anybody have done the Rupkund trek over here? The Mystery Lake, where we found the horses and the human skeletons. Rupkund in the near Bageshwar, ahead of Bageshwar. Okay, so I have done the Rupkund in '93. That time I have trekked from Debal. Okay, Debal is a small town, and nowadays from Debal to Lohajang to Van, and Van to then Bedni Bugal and Bistola and other thing. And the same trek I have done the 2 years back.
and till one we have reached by the vehicle. And at the Bedani Bugyal, there is no place to camp. Everywhere people are, pitching the tents, and it's like a Malroda of Nainital. So pani nahi hai, places nahi hai, and so much pollution people are doing. That's after that UK government have done the ban and the making camping in the Bugyal. So it has to be, in a very what I say is very sincerity manner. It has a very uh, emotional level पे हमें track को करना चाहिए. Not as a business. Initially I told you it's not a business. Adventure tourism is not a business. If you are in the adventure tourism for the making the money, it's better not to do it. Making money at the part of harming the nature and making the system ecological balance disturbance, don't do this. So yes, it's making a lot of impact. So people have to go with the regulation to, like in the Gangotri region, now they are giving the license, the passes issue. Every day they are issuing the passes to enter the Gangotri National Park. So same way there should be some, regulatory board in the state wise to, and it has to be some basic checklist. Like if I'm talking about MP, okay, I'm from Madhya Pradesh, I'm talking about MP. There is no checklist for the who can operate, who can go into jungle, who can go to the forest, who can do the camping. There is no rules. Nowadays, I don't talk about it in Indore, people are going for the trekking at some waterfall and they are carrying the, DJ system. They are carrying DJ system at the base of the mountain. They are playing the songs and people are dancing over there. Is this adventure? This is not adventure. This is some foolishness. They're only making money. They're not respecting. So there should be some regulatory board just to monitor all these things, to take the, the people's, their education, their expertise, their safety, their equipments, and where they are going. So ecotourism board has to become in the forward for that, because they are having a link between the forest department and the tourism department. So their main role should become in the picture in all the states. Yeah. Sir, may I? Yeah, please. Yes, Dr. Sir, the Supriya ji. incident that you told about the DJs and the music system. Sorry, Sunil ji, वापस बताइए, बोलिए. Can you hear me, sir? Yeah, we can hear now, please. Okay. The thing you're telling about the DJs and the sound system, this is not the problem with Indore. I have stayed for a longer period in Bhopal, and even you go to any city, people Yeah. in the weekends go for the truck and they carry, speakers and handy woofers, and they create Yes. noise, a lot of noise in the jungle. They don't understand the concept of trekking and going into the jungles. They create Yes. nuisance for themselves and the animal as well. Yes, Sunil ji. Even when we are going track, I'm doing since last 25 years around Indore, and we even not allowing anybody to open the mobile song in the mobile, and this disturbing the ecology system, the bird. Listen the bird song, yeah, not your your DJ songs. But क्या कर सकते हैं? There is no check on those. Yes. Yes, sir. 20 years before in Bandhavgarh National Park, there no resort is providing swimming pool, room service, and anything. And nowadays, the resort are doing discotheque, swimming pool, and so many activities. They come and for leisure, not for wildlife watching. Now the tiger becomes second option. It's basically one resort destination resort. थोड़े दिनों में देखिए वहां पर शादी भी होने लग जाएगी सर. Yeah, it's a honeymoon destination nowadays. अभी तक हनीमून डेस्टिनेशन शादी में होने लग जाएगी वहां पर. बांधवगढ़ में जब बंद होता है, जब वहां के पार्क बंद होते हैं जून जुलाई अगस्त में, तब वहां शादी होने लग जाएंगी, लोग देने लग जाएंगे. Sir, one of my friend recently got married at Bandhavgarh Resort only. Oh my God, Sunil ji, great. Started. Sir, it would be like जंगल में मंगल होगा. राकेश सर, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है. जैसे आपने शुरुआत में कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स एक अलग विंग है, और मतलब एक अलग टूरिज्म से इसको अलग करके हम पॉलिसी बनाएंगे तभी ये डेवलप हो सकता है. टूरिज्म के साथ ही ठीक से डेवलप नहीं हो सकता. लेकिन चूंकि अभी तो हम फिलहाल ये एज ए पार्ट ऑफ टूरिज्म है, और हम लोग भी एज ए पार्ट ऑफ टूरिज्म इसको पढ़ा रहे हैं, तो कई बार ये ऑप्शन होता है, जैसे अगर कोई माउंटेनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, तो वो एक स्किल बेस हो गया. टूरिस्ट को पहले प्रायर ट्रेनिंग करनी होती है
तब वो एडवेंचर एक्टिविटी कर सकता है। हम क्या इस तरह के कुछ चीजें कर सकते हैं कि टूरिस्ट हार्डकोर एडवेंचर एक्टिव नहीं है, एडवेंचर नहीं करना चाहता, लेकिन वो मनाली गया है, उसके पास 2 डेज का एक्स्ट्रा टाइम है, वो मनाली दूसरी बार तीसरी बार विजिट कर रहा है और वो कुछ ऐसे ट्रैक पे जाना चाहता है जिसको केवल वो 2-3 घंटे की ट्रेनिंग करे और उसके बाद वो 1-2 दिन के लिए ट्रैकिंग पे जा पाए। तो क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब एक तो वो होता है जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है टूरिस्ट के लिए कि हम आपको कर देंगे, परंतु प्रोफेशनल वे में क्या इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की सर्विसेज टूरिस्ट को ऑफर करें कि आफ्टर 1-2 आवर ट्रेनिंग दे कैन गो फॉर 1-2 डे ट्रैक? ओके, फैंटास्टिक सर, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता ही है लोगों का, बट लेट मी क्लियर इट टू यू कि हर एडवेंचर के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ट्रेनिंग की टूरिस्ट को जो गेस्ट हमारे कहते हैं, जिनको कराना है, उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लाइक ट्रैकिंग, अगर मैं मनाली में ट्रैकिंग की बात करूँ, व्यासकुंड ट्रैकिंग की बात करता हूँ मनाली में, या अपना व्यासकुंड हो गया, या छोटे मोटे और आसपास के दूंदी नाला तक के ट्रैक हो गए, या बकरताज का ट्रैक हो गया, जो इस तरफ हमारा हेमता पास का बेस तक का ट्रैक हो गया। तो लेवल्स अलग होते हैं सर, कि जैसे मैंने बताया हमारा ट्रैक जो गज पास जा रहा है, उसमें 5 साल का बच्चा भी जा रहा है, 17 साल का बच्चा भी जा रहा है, वो पहली बार जा रहे हैं। तो इफ यू कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, यू कैन डू द ट्रैक, बिकॉज इट्स मोर देन मेंटल देन द फिजिकल इन द ट्रैकिंग। लाइक मनाली में जाएंगे तो ट्रैकिंग करना, ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेंटल मेकअप उनको करना है कि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनको प्रॉपर चाहिए, इक्विपमेंट लाइक क्लोथिंग चाहिए। दे शुड नो कि इट्स नॉट अ टेरेन, इट्स नॉट अ व्हीकल ट्रैक, सो उनको चलना होगा। Yes, Youth Hostel is doing fantastic job across India. They are doing fantastic job and they are having good tracks, easy tough track, and उसमें मैक्सिमम लोग फैमिलीज आती हैं, they are doing track। मनाली में हर जगह पे कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इजी ट्रैक करते हैं। देखिए, हमें वही कहना होता है कि सबसे पहले लोगों को एजुकेट करें हम। सामने वाला चाहता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं हिमालय जाता हूँ हर साल, तो 90% ऑफ द पीपल के दिमाग में आता है हिमालय मतलब एवरेस्ट। हिमालय मतलब एवरेस्ट नहीं है, हिमालय मतलब 2500 किलोमीटर लंबी लॉन्ग चेन है, जो अफगानिस्तान से चल करके बर्मा में खत्म होती है, जो तिब्बत से आकर के इंडिया में खत्म होती है। इट्स लॉन्ग चेन ऑफ द माउंटेन रेंज, उसके पार्ट से रीजन है। अब माउंट एवरेस्ट का पार्ट है, उसी में मनाली भी पार्ट है, कुल्लू भी उसका पार्ट है, शिमला भी उसका पार्ट है। अब शिमला को विजिट करेगा तो उसमें एडवेंचर क्या है? नथिंग, आदमी आराम से जा सकता है। सो हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि वो किस लेवल का एडवेंचर करना चाहते हैं और उनका क्या डिफिकल्टी लेवल आएगा। तो जो हमारा एक्सपर्ट होगा वो उनको ट्रेन करेगा, मेंटली ट्रेन करेगा कि आपको ये शूज लेने हैं, ये कपड़े पहनने हैं, सामान उठाना है उठाइए, नहीं उठाना तो पोर्टर मिल जाएगा, और इस तरह से टेंट में रहना है, और वो मेंटल मेकअप हो जाएगा उसका, देन इट्स विल बी ए गुड ट्रैक। हाँ, लेकिन जब उनको, जैसे हेमता पास की बात करो, हेमता का पास का अगर सर्किट हमें करना है, हेमता पास को क्रॉस करना है, तो वो लेवल थोड़ा बड़ा है, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का लगेगा, या पुराना आपको एक्सपीरियंस लगेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर 2500 से 3000 मीटर की हाइट तक के ट्रैक अगर हमें कराने हैं, तो नोवाइस भी जा सकते हैं, फर्स्ट टाइमर भी जा सकते हैं। लेकिन 3000 से या 3500 के ऊपर के ट्रैक हमें करने हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए जिनको पहले ट्रैकिंग का अनुभव हो, सो दैट उनकी बॉडी का उनको पता हो कि आधे उनकी बॉडी वहाँ के एटमॉस्फेयर से सूट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मेडिकल कंडीशन की एक इश्यूज आते हैं। अगर हाई टू सिकनेस हो गया है या लो अल्टीट्यूड सिकनेस भी होता है, वो हो गया है तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सो ओनली एजुकेट द पीपल कि उनको क्या करना, कितना करना है। हाँ, बहुत लोग आते हैं मस्ती करनी है तो उनको वहीं से रिजेक्ट कर दीजिए। चूज योर क्लाइंट, एजुकेट योर क्लाइंट, देन टेक देम। क्लाइंट तो चाहता है कि वो माउंट एवरेस्ट पे चला जाए, लेकिन उसकी कैपेसिटी है या नहीं, उसका मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल, उसकी ट्रेनिंग लेवल वो है या नहीं है, ये हमें चूज करना पड़ेगा। जैसे अभी लास्ट डे हम लोगों ने कुआरी पास का ट्रैक बनाया था, सो मेनी पीपल वांट टू कम विद हिम, बट आई हैव टू चूज कि ये स्नो ट्रैक है, माइनस टेम्परेचर वाला ट्रैक है, तो कुछ लोग ही जा पाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, उनके लिए इजी ट्रैक्स है, वो दूसरे ट्रैक्स होंगे। सो वी हैव टू एजुकेट देम डेफिनेटली। आई होप आई आंसर्ड यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। या एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एंड somebody asking me, इनिशियली बोला था उन्होंने, चादर ट्रैक में मेडिकल इश्यूज के लिए बात हुआ था, राइट? somebody asking। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक ने राजश्री जी पूछ रहे हैं, डू यू हैव एनी इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिकल कवर? ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में मेडिकल कवर इस चीज के लिए मुझे नहीं मिला है। अगर आपके पास कोई हो तो मुझे बताइएगा। जिस जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने बात किया है, उन सब ने डिनाई कर दिया है कि हम ट्रेवलिंग के लिए कर देंगे। हम, अगर आप जस्ट आज पूछिए किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से कि इंश्योरेंस चाहिए, उनके दिमाग में सीधा कि फॉरेन ट्रेवल के लिए इंश्योरेंस मिलता है, इंडिया ट्रेवल के लिए इंश्योरेंस नहीं मिलता है।
सो प्लीज हेल्प मी इन टेकिंग द एडवेंचर्स एंड ऑल। एडवेंचर इंश्योरेंस नहीं मिलता है। हाँ, सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म के लिए मिला था चादर ट्रैक में, जो 18 में मैं गया था चादर ट्रैक, तब इंश्योरेंस नहीं था वहाँ पर। लेकिन कुछ कैजुअलिटी हो गई तो 19 में उन्होंने इंश्योरेंस वहाँ पर चालू किया था। और वो इंश्योरेंस चालू किया था, सिर्फ पैसा बनाया था और कोई फैसिलिटीज नहीं दी थी। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस का एक इशू आया था, जो मैं A2I का भी मेंबर, तो उसमें मैंने वो रेज किया था। क्या होता, हम लोग चादर ट्रैक गए थे, 18 में तो गए थे तब तो इस ओके, बट 19 में भी हम लोग टाटा इज प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक इंश्योरेंस दीपक जी, पर वो एडवेंचर टूरिज्म के लिए इंश्योरेंस देते हैं देते हैं, दैट आई डोंट नो। वो डेफिनेटली वो इतनी सारी उसमें क्यूरीज निकाल देंगे कि वो अगर होता है तो प्लीज रिवर्ट मी, मेरे नंबर सामने है, मुझे दीजिएगा, क्योंकि मेरे तो ट्रिप्स आते रहते हैं, तो हमें टूरिज्म की बहुत, इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। बता चादर के लिए तो बेस चादर लेह में हमको 3 दिन रुकना होता है, तो वहाँ रुक करके हमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, सो दैट बॉडी एक्वलाइज प्रॉपरली हमारी कर जाए वहाँ पर। एंड वहाँ बीपी चेक किया उन्होंने, मेडिकल चेक के नाम से बीपी चेक किया, और उस बीपी चेक में 2 लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं जा सकते हैं। ओके, हमारे 16 का टीम गया, 2 लोग बाहर हो गए। हम लोग चादर में गए, बेस कैम्प में गए। बेस कैम्प में गए, वहाँ पर जाकर के हमारा वहाँ पर सिर्फ उन्होंने हमारा मेडिकल के चेक पे नाम से हमारा वो ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, दैट्स ऑल। क्योंकि वो सब मैं भी कैरी करता हूँ, ऑक्सीमीटर सारा इक्विपमेंट मैं भी कैरी करता हूँ अपना, तो हम लोग खुद ही चेक कर रहे थे। वहां पे इतनी ठंड थी कि 2 लोग वहां से रिटर्न हो गए। ओके, क्योंकि वो लेकिन कुछ जैसे उनकी कुछ की तबीयत खराब हो गई तो उनको वहां से रिटर्न। आगे जब हम लोग टिप केव पर गए थे, तो एक गर्ल की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, उसको हाई टू सिकनेस हो गया एंड ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो गया। एंड ब्रेथलेसनेस का हुआ तो शी इज फीलिंग वेरी अनईजी एंड ऑल। तो हम लोगों ने, मेरे पास में 2, आई एम कैरिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल, कुछ मैंने ऑक्सीजन के पफ दिए वहाँ मेडिकल जो, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो मेडिकल वाले के पास में गए, तो हमने पूछा कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास में है। तो उन्होंने बोला हमारे पास सिर्फ एक टेंट है और ऑक्सीजन सिलेंडर है। आई आस्क सम मेडिकल कि आपके पास डेक्सोना, डेरिफाइलिन या कुछ ऐसे टैबलेट्स है? बोले कुछ नहीं है। दे डोंट हैव एनी टैबलेट, दे डोंट हैव एनी सिरिंज, इवन नेदर डेक्सोना, नो एसओएस, एनी काइंड ऑफ, इवन डायमॉक्स भी नहीं थी। डायमॉक्स तो आपको पहले से लेके जानी होती है। तो बट एज आई कैरी एवरीथिंग, सो आई हैव गिवन, हमारे साथ डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने उसको डेक्सोना लगाया एंड ऑल दिया। फिर एक हमने उसको पूरा एक जो एक स्लीपिंग बैग में पूरा पैक किया, थर्मल लगाया, देन इंसुलेट किया जो शीट होती है, एंड रात भर हमने उसको ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन देने के बाद मैं एंड वो डॉक्टर और हम लोग जो हमारे टीम के ही थे, हम लोग साथ में रात भर उसके साथ में ही रहे। और नेक्स्ट डे फिर हमको हमारे मेन गाइड को, एक गाइड को हमको उसके साथ में लेकर के इसको हमको नीचे वापस भेजना पड़ा, एंड दैट इज अगेन ए 2 डे जर्नी। सो उसको बड़ी मुश्किल से उसको सर्वाइव कराया, देन उसको वापस हमने भेजा, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन ओवर देयर, वहाँ पर सिवाय सैटेलाइट फोन ही चलते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है। एंड फिर बड़ी मुश्किल से हमने उसको ले भेजा, ले में जो होटल था उसको वहाँ पर हमने करवाया, लेकिन हमारा कोई बात नहीं हुआ था। सो वी हैव टू ट्रस्ट ऑन पीपल, और पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भोले होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, सो वी ऑलवेज ट्रस्ट दोज पीपल। सो उनके साथ हमने उसको भेजा, अकेली लड़की थी वो गई, और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैक कंप्लीट किया, अपना चादर ट्रैक किया। एंड यस, आई ऑलवेज कैरी माय ओन मेडिसिन, मेरा पूरा एक बैग, मेडिकल बैग्स ऑलवेज जाता है उसमें। बट जो मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ थिंग एक्सेप्ट टेंट एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड देन डोंट नो हाउ टू ट्रीट द पीपल। सो ओनली थिंग इज दैट कि करना और होने में बहुत फर्क है। सो जो भी हम एजेंसी को ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी हमें चेक करना चाहिए। एडवेंचर, स्पेशल एडवेंचर टूरिज्म, शिमला का टूर लगाया डोमेस्टिक टूरिज्म में या लीजर टूरिज्म में, एक होटल खराब है तो हमने दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया उसको, लेकिन जंगल में, पहाड़ में, वहां हम क्या करेंगे? वी कैन नॉट हैव द अदर टेंट, वी हैव टू रिलाई ऑन द ऑपरेटर, उसकी सर्विसेज में खाना खत्म हो गया, क्या करेंगे वहां पर? इस तरह की इमरजेंसी आ गई, क्या होंगे? सो दैट्स व्हाई इट्स what suggestion you give for the doing चादर ट्रैक? और सर चादर ट्रैक इज अमेजिंग ट्रैक, 2 साल मैंने चादर ट्रैक को किया हुआ है, एंड ओनली थिंग इज दैट इट्स अ मेंटल लड़ाई है पूरी चादर ट्रैक की, एंड यू बी बेस्ट प्रिपेयर विथ योर मैक्सिमम गुड इक्विपमेंट एंड गुड फूड। देखो चादर ट्रैक इज नॉट डिफिकल्ट ट्रैक मेरे हिसाब से, डिफिकल्ट नहीं पर चैलेंजिंग है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं कि अगर चलना चढ़ना है थकान हो रही है, ऐसा नहीं है, आप पेंगुइन वॉक कीजिए, आराम से चलेंगे, लेकिन वहां पर बहुत लोग गिरते हैं, हड्डियां टूटती है, इस बात का ध्यान हो। तो whenever you are sitting over there, don't take selfies and photography, okay? उसके अपने टिप्स एंड टूल्स हैं, लेकिन चादर ट्रैक आराम से हो जाता है, लेकिन सेफ्टी मान के चलो। और वहाँ के जो गाइड है, उस गाइड की सुने,
लोकल का सुनना बहुत जरूरी है कि मैं चादर में इतना इतना जमीन पानी में गिर चुका हूँ किसी को बचाने के चक्कर में, पानी के अंदर, मेन रिवर के अंदर, एंड आई सर्वाइव विद आई डन द क्रोलिंग, I done the crawling, and 4 leg on the chadar, on the main chadar. 2 time I drop in the main river. लेकिन बच गया कि जैसे गिरा मैंने अपने हाथों को फैला लिया तो मैंने बढ़ा लिया, फिर then I have crawled to till out, so I survived in that. So ऐसा भी होता है. So because I trained myself psychological and physical as well to cope up with this kind of condition, then okay, but it's sometimes it's become very dramatic. So have good clothing along with you, because you may encounter -30, -40 temperature. Good mental level, and start running, start taking good exercises, yoga. Do yoga and meditation. It works very well in the Himalayas, and enjoy. And जहाँ आपके गाइड ने, वहाँ का झंस्कार का जो गाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक आता है गाइड आपको देना होता है, उसकी बात सुने. वो कहता है यहाँ ना जाओ तो मत जाना, because what the power they have, they can see from a distance कि यहाँ चादर टूटी हुई है, यहाँ चादर जली हुई है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना. Believe in them whether you are आप अंटार्कटिका भी जा चुके हो, लेकिन चादर is a different world. So listen to them and enjoy the world. It's a चादर is चादर. It's a third world. पहले मेरे लिए ट्रैकिंग और माउंटेनिंग होता था, now it's become चादर also. So 2 बार चादर हो गया है. Next year I am planning to go to the Janskar and the Padam village, so beyond this Nerek waterfall. Yeah. Sir, there are few questions. The other adventure tour operators following all the government rules and regulations? It's a question to me. Yes, sir. Are they following government rules and regulations this way? Yes. Are they following any guidelines which are notified by government, safety related, equipment related? Yes. In See, personnel, etc. The bigger players, those who have to have the registered with the IMF, Indian Mountaineering Foundation, and also I suggest that they should register with the ATOI. This is the wholesale authority of the adventure tourism. And ATOI people, time to time, they release the SOS for the adventure tourism, the new policies, new everything. So they keep updating their members that what is the basic need. So generally, those who are registered with the A2I, you should go with them, because they are prominent, they are educated people, and they are in, there is some people behind them to feed them proper updation of the knowledge and now. Otherwise, जो मतलब हम उसकी गाड़ी में, बस में कैसे बैठेंगे जिसके पास लाइसेंस नहीं है. ओके, हम बस में लाइसेंस, ड्राइवर के पास लाइसेंस तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम. आती भली है चलाना, जाते भले ही लोग हैं, पर एटलीस्ट फ्यू बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना. एक कंपाउंडर होता है, एक डॉक्टर होता है, चाहे वो ऑपरेशन करे या ना करे. कि जब कहीं अटकते हैं तो वहाँ डॉक्टर के ही काम आते हैं. कंपाउंडर खाली इंजेक्शन लगा सकता है, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस नहीं. सो दैट trained people are trained people, educated people are educated people. So those who are having the IMF registration and the A2I registration, you should go with those agencies. There are so many people over there, so many people. Yeah. Sir, can you explain the current scenario of adventure tourism skilled professionals? What are the requirements and how they can fulfill? See, I think if somebody want to go for the skills in the adventures, like what you are talking about? Yes, so what is the requirement? I mean, how many people are required? How much scope is there? See, scope is immense. Nowadays, the adventure tourism in India, it's I think it's moving from 20 to 25% per annum की speed से बढ़ रहा है India में. Okay, so everywhere, even if I'm talking about me in MP, I'm not find prominent people, 10 people in MP for my adventure park or for my adventure activity. I have to hire from the Himachal, Uttaranchal, or maybe Assam, from Bengal. So there are immense. There is no, as I told you, there is no data available कि किसको लगना है कितना, because there is no, everybody is not associated with the ATOI. Okay, and only few people are associated with the ATOI or IMF. लोग कहते हैं यार क्या जरूरत है, जंगल में जा रहे हैं ना, क्या जरूरत है. So there are immense, means everywhere, in like in Bhopal, my fellow friend in the Bhopal, he also agree with me कि वहां पर भी बहुत से एडवेंचर्स कर रहे हैं, लेकिन खाली रस्सियां बांधना, रैपलिंग करना is not the rock climber. You have to know all the things. And we have only, surprising, we are only five institute in India, and one is that Mount Abu, they are producing the rock climbers and all. But there are immense possibilities
to act as a instructor, act as a tour operator, as a traveler, as a adventure traveler. And क्या होता है कि जो लोग एडवेंचर, देखिए एडवेंचर करने की एक लाइफ है. मैं जब यंग था, इनफैक्ट आज भी हूँ आपकी तरह से, so that time I do a lot of tracks. Okay, now when I become my company, then I have to hire the trackers, I have to hire the people. So मैं वहां से आउट हो गया हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर से मैं बाहर हो चुका हूँ. I become the corporate trainer, and but I start hiring the people, those who are adventure people. Okay, because I am a trained mountaineer, so I hire the trained mountaineer only. So what are your requirements, sir? Like, what is the basic profile which you look for? I'm basically looking Higher. for the higher post. I require basic mountaineering certificate should be there for the instructor to appoint anybody to take the people in the forest, to take the people for the camping. Basic mountaineering course should be required of 28 days in the Manali and other 26 days. At least कुछ तो एक नया मिलता है, कुछ तो नई एनर्जी मिलती है, and they know how to knotting मालूम चलता है, survival मालूम चलता है, they understand the weather, they have basic. So basic BMC should be minimum qualification for this, or at least जो हमारा माउंट आबू में है वहां से बेसिक कोर्स किया हुआ है, एडवांस कोर्स हुआ. बट बीएमसी, आई प्रेफर बीएमसी ओनली, तो बीएमसी किया हुआ हो. Okay. और And qualification or क्वालिफिकेशन सी एडवेंचर एक ऐसा है जिसमें ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, 12th पास भी हो चलेगा. क्योंकि जो लोग कोई कंपनी की जो ऑक्सफोर्ड से एमबीए किए हुए होते हैं, एडवेंचर वालों को वो भी सर करके बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ रिस्पेक्टफुल जॉब. If people are coming to you for the rappelling, for the trekking, or camping, they call you sir. So 12th is minimum qualification. But अगर हाँ, क्योंकि अगर 12th है, कोर्स किया है, तो वो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर के बाद एक बेसिक लेवल तक पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर एमबीए है और कोर्स किया हुआ था, then they become the trainer for the corporate sector, like me. If कॉलेज किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, and then become instructor, then they can make your own company, because एडवेंचर सेल करना भी अपने आप में एक टास्क है. It's not easy. Everybody is not going for that. So for that, करवाना, खुद करना is okay. करवाना किसी और को, किसी तैयार करना कि जंगल में जाना है, माइनस टेम्परेचर में चलना है, जंगल का कच्चा पक्का खाना खाना है, टेंट में रुकना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, रिक्वायर चैलेंजिंग टास्क. सो उसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन होगी, थोड़ा मैनेजमेंट साइड लगेगा, लाइसेंसिंग होगी, नेगोशिएशन होगा, कॉस्टिंग में. लोग बोले जंगल में तो ले जा रहे हो, कॉस्ट क्यों ले रहे हो, खाना भी तो कच्चा पक्का खिला रहे हो, कॉस्ट क्यों ले रहे हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द फिनोमेना टू टीच दैट. यस. Okay, so what are the scope for adventure tourism, trekking, and mountaineering in the western coast area, and I mean Western Ghats and West Coast? See, Western Ghat is the, I call it second Himalaya, because it's immense because of the Himalaya, this Western Ghat. So coastal trek अभी काफी हो रहे हैं, जो फॉरेन में क्रेज है, वो क्रेज अभी भी इंडिया में शुरू हो गया है कोस्टल ट्रैक्स का. एंड वेस्टर्न घाट में there are so many camping sites are coming up, so many tracks are coming up. Now people are going for peak to peak trekking camps and all, and there are so many agencies in Mumbai and Pune. Pune is the trekking capital of India, I would say. So there are so many, every second youth is a trekker over there. वहाँ पिकनिक तो करते ही नहीं है, वहाँ तो people are going for the camping and all. And छत्रपति शिवाजी की जय, so they are very much blazed with so many fort over there in Karnataka and Maharashtra. So visiting the fort, have the culture, have the ambience of that, and climb up. So even we are from Indore, we are going 4 times in a year in the Maharashtra for the trekking and all. और ये सोचा कि यार वहाँ पर 350 प्लस फोर्ट है, ये जिंदगी तो कम पड़ जाएगी वहाँ सारे फोर्ट्स कवर करने के लिए. सो बहुत बहुत ज्यादा अभी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड प्रोफेशनल तरीके से काम करने की जरूरत है. नॉट एज ए प्रोफेशनल तरीके से, मतलब ये नहीं कि डीजे ले आके वहाँ बजाया जाए. प्रोफेशनल तरीके से बस सेंसिबल टूरिज्म होना चाहिए, सेंसिबल वे में आपको इसको करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. Upselling, how about upselling and rappelling in India, whether promoted in India currently or not? See, upselling and rappelling both are the same, Naveen ji. Upselling German word है जो rappelling को बोलते हैं. Rappelling is just a one part, क्योंकि खाली rappelling के लिए कोई camp नहीं होते हैं. When you go for the rock climbing, you climb up with the rock face and you rappel down from that. But yes, कुछ जैसे महाराष्ट्र में कुछ जगह है जहाँ पर rappelling हो रही है, and वो 2-3 स्टेज में कर रहे हैं. अराउंड 1000 फीट 2000 फीट की रैपलिंग्स हो रही हैं. कोकणकड़ा एट हरिश्चंद्रगढ़ में, यस, कोकणकड़ा जो जबरदस्त प्लेस है हरिश्चंद्रगढ़ का, तो वहां रैपलिंग हो रही है, 2-3 स्टेजेस में हो रही है. तो इट इज, बट इट्स ए 1 डे, इट्स ए 1 डे और 2 डे प्रोग्राम. इट्स ए 1 डे 2 डे प्रोग्राम. जो आदमी जाएगा, रैपलिंग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेगा, एंड इसमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वंस पीपल आर सीइंग अदर्स, दे कैन, इट्स रॉकेट, एडवेंचर इज नॉट अ रॉकेट साइंस.
Mountaineering is can be 10 people can, but anybody can do it. But देख के समझ में आता है क्या करना ही तो है rappelling, और everything is based on the equipments. So let them Yes, sir. equipment do their work, then it's okay. And somebody Sir, Anuj, there is a very interesting question. yeah, As you said, you have to give a couple of days time for acclimatization yes, in the higher altitude. yes. So, if the nearby areas or that region has any, festivals, Madhumita madam has asked this question. So, if there are any festivals, so it can be merged with that. So, 2 days instead of doing nothing, they can be shown around if there is any festival or anything, kind of rural tourism or cultural tourism, we can say. Yes, yes. See, acclimation में वहाँ करेंगे क्या जाकर के? Like if you climb say around 2000 मीटर पे चले गए, वहाँ करेंगे. You have to go to the nearby. अगर फेस्टिवल है जैसे नागालैंड में फेस्टिवल होता है, कहीं भी होता है, या लेह में है. That's best way to include the culture in that. Go over there, dance with them, eat their food, climb high, sleep low. This is the best fun in the mountain. Climb high, sleep low. So if you are at 2200 meter, you campsite, and you want to spend 2 days over there, तो कितना bird देखोगे यार, कितना पेड़ देखोगे, कितना तारे देखोगे. Okay, so climb high, से एटलीस्ट 500 मीटर ऊपर क्लाइम करें, आसपास के विलेज को एक्सप्लोर करें, कुछ फेस्टिवल है तो गो, अपने लंग्स को काम कराना. सिंपल फंडा इज इट. Once your lungs will be working over there, खेलो कूदो, सीटी बजाओ, गाने गाओ, कैंप फायर करो, क्लाइम हाई, स्लीप लो. क्लाइम हाई कर दिया, 500 मीटर क्लाइम हाई कर दिया, वहां के गांव वालों के पास गए, वहां से बातचीत करी. इवन आई टोल्ड यू, मैं तालंग पास गया था, जो होली विलेज के आसपास है, वहां पर गए थे हम लोग. वहां का कल्चर देख के भी हम दंग रहे, क्या गांव का कल्चर है. सो एवरी विलेज हैविंग इट्स ओन कल्चर. सो कल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडवेंचर टूरिज्म ओनली. अगर आप हिमालय पे जा रहे हैं, 2500 मीटर पे कैंपिंग कर रहे हैं, इफ यू डोंट नो द बर्डिंग, you are not doing complete everything. You don't know the tree, you don't be the master of everything, but कुछ birds तो मालूम थे, ये bird कौन सा, ये tree कौन सा, ये तारे कौन से हैं, where, how to look, ओरायन किस तरफ है, where is which side is this north star किस तरफ है. अरे वहां जा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं ऊपर तारे, तो यार आप you are not using completely your thing. You should know the what are the peaks available, which river is this, which birds are the basic. Don't be the master of it, junk of all. Yeah. Another question, sir. Is there any set of specific questions you ask to your clients to check their mental Yes. and physical health? Yes. Number first, when people are coming to me and first उनका क्वेश्चन होता है कि सर हमें बहुत शौक है एडवेंचर का. मैं उनसे पूछता हूँ कि how you find the adventure and what you till date done nothing. Have you googled something in adventure? Nothing. Then how you say that they have the shock of that, they have the habit? So number thing, because they impress with the adventures, they don't have the adventure in that. First question. Second, I asked what kind of level of adventure they want to go. If I'm talking about trekking, so have they done any trekking before? Local trek or Himalayan trek? If local trek, yes, then it's okay. Himalayan trek, which level, which height maximum they have trek? Is there any problem they are facing in the local trek or in the Himalayan trek? Maybe in the mountain trek, 1 day or 2 days. If they are barren, if they don't have any trek, they don't have any kind of exposure to the trekking, then I suggest them, okay, we'll take you for the easy track, initial level track, but you have to do something to start walking. And एक thumb rule हम लोग बना के रखा हुआ है, if they can walk or run 4 kilometers in 30 minutes, then we will take them. Okay, so they start walking, so that, and I know कि अगर walking नहीं भी करें तो वो जा सकते हैं, but they are prepared mentally. Mentally is more that they are going for that terrain which is not used to in their day-to-day life. And then we, once we make them, okay, now this is the track what you have to go, or this is the rafting what you have to go. Rafting is okay, like you club rafting with the Manali tour or maybe Kullu tour is okay, but trekking is a long 10 days. So we make them include in the WhatsApp group, and we feed them every day few of the lessons. We teach them how to pack the rucksack, how to take the best equipments, what are the equipments, this and all. So they prepare themselves mentally, they are preparing themselves, they are doing for a track, they are going for a track, they are going for a track. There is not such condition. Sometimes they do jungle and mangal for the toilet, for the, kind of thing. So we have to educate them completely. I told them कि वहाँ तो सोने की भी जगह नहीं मिलने वाली है, कभी टेंट उड़ गया तो क्या करोगे, जंगल में सोना है आपको, kind of thing. So we prepare them for the worst and give our best, and they go for it. Right, sir. Yeah. So in adventure nowadays, a lot of
wannabe, I would say wannabe, motorbikers are there. They just purchase bikes and they believe that they are bikers, and the first thing what they want to do is go to Leh. So, so what do you say, sir? I mean, just having a bike and knowing how to ride. What is your take on that? Because there are many companies actually nowadays which are there to which are organizing these biking tours. Yes, they are doing it. So nothing harm in that. Nothing harm in it, because biking is a new trend in India. In fact, after the revolutionary change in the Enfield, okay, they make a culture. Enfield है तो उसको वहाँ मत्था टेकना ही टेकना है जाकर के, ओके, खारदुंग में जाकर के फोटोग्राफ लगा के करना है बुलेट, यस, and the same with the Harley and all. So there is nothing wrong in that. Only the sensible tourism should be there. The agencies over there, they should take care of, like Ladakh जाते हैं वहाँ जा करके, they even I don't prefer to drink the mineral water. छोटी सी बात है mineral water, but they drink the mineral water and they throw the bottle over there. So what for they are going to there? Are they going for the beauty? If they are going for the beauty and they are damaging it. So only the people who are responsible for arranging all these tours and all, so they should promote the local culture and the sustainable tourism kind of thing. So they have to pull back everything what they are bringing over there. Even यार लद्दाख जा रहे हो, वहां जाके आप मिनरल वाटर पी रहे हो, वहां का स्ट्रीम वाटर छोड़ करके, मतलब what is this? What you want to do? It's a kind of people are. It means those people, those who are arranging for them, they're not educating properly. They're just only making money. And we cannot stop all. We cannot stop all. वो सर का क्वेश्चन सही था कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके लिए. So regulatory board उसमें होना चाहिए. So only thing is educate the people. If when the people are educated, they don't respect the nature by force. They respect the nature by choice. It's my own nature, so I have to respect it. But yes, people are going. Even in Madhya Pradesh also, there are so many biking tour over there. Not in the Himalaya, everywhere. So if they stop, damaging the pollution and everything, damaging the thing, it's okay. But उससे फायदा भी है, लोगों को खाना भी मिल रहा है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, लोकल लोगों का कल्चर भी लोगों को बढ़ रहा है. So it's having a one bad side and good side both. So we have to look for the good side, and bad side को minimize कर दे. खत्म तो नहीं कर सकते bad side को, but we should minimize it. More awareness programs can be organized, or more sort of awareness should be given to these people. So I do whatever trek I do, whosoever company I take along with me, I educate them properly ki what I am expecting from them, what they are expecting from them. No, what I am expecting from them. I teach them, told them, and then only I take them with it. Anush sir is asking, I mean, more than a passion for adventure or trekking and everything, it is more because of the influencers on social media. Yes. बिल्कुल सही. आप देखिए ना, हरिहर फोर्ट का देखिए, अगर if you are following last COVID, फोर्ट, एक फोटोग्राफ आया था हरिहर फोर्ट का. Now it become हरिहर फोर्ट immense popular and हमने अभी तक नहीं किया उस फोर्ट. ओके, चादर ट्रैक में those who are people are making a dubki in this Chadar freezing river and come up, oh wow, become. So social media is the only way these days to show their what they can do. मुझे पता है कि उसके आने के बाद उनकी वाट लग जाती है. Those who are not a trekker, to as a tourist, as a traveler बनकर ट्रैकिंग करते हैं. ट्रैकर एंड ट्रेवलर आर डिफरेंट पीपल. एक ट्रेवलर अगर ट्रैकर बनता है तो मुश्किल है. ट्रैकर कैन बी ए ट्रेवलर, बट ट्रेवलर cannot be a tracker, and tracker never want to become traveler again. So social media में होता है. That's why educate is the education is the most important thing to your client. Educate them properly. And social media में दिखाने के लिए लोग जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं और फोटोग्राफ लेते हैं. लाइक अभी जो हालत इसकी हुई है, केदारकंठा की हालत हुई है, just because of the social media. हर सर फूट केदारकंठा, चादर ट्रैक केदारकंठा, something, all social media and this all kind of things. So, and we cannot stop them, na. We cannot stop them. There is nothing harm in that. But जब प्रॉब्लम आती है तब फिर वो अगली बार के ट्रैकिंग के लिए तौबा कर लेते हैं. बहुत से मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं जो ट्रैकिंग के लिए जिंदगी भर की तौबा कर लेते, तो वो भी गलत फैक्टर है. Yes, sir. I think we have exhausted all the questions. I have a small question before we close the session. You are also into this corporate training and leadership building programs. So what are those exactly? Can you just brief us about it?
Okay, fine, fantastic. So this is the, what I call is a journey from an adventure person to a corporate person. Okay, so this is the what my decision is. I'm an experiential leadership coach. I'm outbound master, outbound trainer. So outbound is like that. I go in I train the corporate people. I teach the teachers as well, like. ATAL, Bridgestone, UNICEF, NTPC, ONGC, Maruti, they all are my client. In fact, tomorrow also I have a training. So as I am engineer, as I am MBA, and as I am a mountaineer. So mountaineer, what I learned at the height of, let's say, 20,000 feet, the team building over there, how to manage the team, how to take the decision making, how to make the good leadership quality over there, how to fight yourself. So, जो मैंने MBA में नहीं पढ़ा वो मैंने माउंटेन में पढ़ा है. माउंटेन ने मुझे सिखाया, तो वही चीजें, वही एक्सपीरियंसेस आई सबमर्ज, have a one curriculum kind of thing, not a written curriculum in my mind kind of, and I deliver to my my clients. Like say एक company, परसों जो company के लिए मैं काम कर रहा हूँ, okay, so they have a huge staff, so I'm taking a batch of 20-25 people, we are taking them some resort, we'll go over there, then we do some kind of experiential activities. Okay, trekking नहीं करेंगे या कोई rock climbing नहीं करेंगे, sometimes 2-3 दिन का कैंप होता है, we include rock climbing or rappelling in that to face the challenge in your life. सपोज लाइक एनटीपीसी के लिए मैं रैपलिंग यूज करता हूँ. अब रैपलिंग देख के लगता है, डर लगता है लोगों को, ओके डर लगना है, सेम चीज उनकी कंपनी में भी आती है. कंपनी में हाउ आई रिलेट विद एडवेंचर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो कंपनी में भी उनको कोई एक प्रोजेक्ट दिया, रैपलिंग देख करके डर लग रहा है, वो प्रोजेक्ट देख के डर लग रहा है, रैपलिंग देख के हो रहा है ये हमसे नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट देख के हो रहा है हमसे नहीं होगा, राइट. बट वंस दे सी समबडी टू डू द रैपलिंग करते हुए देखते हैं, या उनको हम टीच करते हैं, हो जाएगा, सेफ्टी है, थोड़ा सा माइंड मेकअप कराते हैं, and when they once they do the activity, the rappelling, and after completing the activity, they think that, oh yeah, I can do it, yes, I want to do more time, because he want to enjoy. The same manner may when the project is coming to them, initially they have rejection for both the thing, rappelling and the project, but once they adopt the project, it's a challenge. Once they start enjoying it, then they will be through it. So this is how to accept the challenge. The basic funda is to accept the challenge. Same way, there are so many people in the team. They are, having ego and stress problem each other. So when we do a lot of experiential activities in that, so and then we do the debrief. Mountain ने मुझे इतना सिखा दिया है कि मैं बोलने लग गया हूँ. When I am doing engineering, I am not very talkative. When I become this in the mountain field, it's become, mountain is my guru. Okay, so मैं तो जो आता है मैं बोलता हूँ, kind of thing. So people are interested in, nobody interested in sitting in the classroom and seeing the laptop and all. अभी मैं रोहित जी ने मुझको यहाँ मजबूरी में बिठा दिया है जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं. That's why I don't want to be a kind of typical kind of environment and talking ifs and buts वाली talking. No, I just want to be free because I am a man of mountains. एक माउंटेन वाले को आप कमरे में बिठा दोगे वो कैसे बात करेगा भाई. So this is the ultimate journey from an instructor to a corporate world, and in the corporate world you earn the money, you enjoy your life, you enjoy your nature, you enjoy. Even I am taking them for a one night trek. We do the treasure hunt in the night trek, we do the tag hunting in the forest area, so it's all related. So the more you educated, the more you see understand the crux of the adventure. Adventure fun? No, it's not fun. It's the crux of the adventure. The learning part of it is the transformation part of it. Is transform yourself. एक ट्रेवलर होता है, मनाली शिमला घूम के आगे अच्छा लगा, हो गया, but what is transformation? Nothing. Adventure, you should have the transformation in yourself. Your client should have a transformation in self. Yes, I am from a person, I have become the more confident, more challenging, more adaptive, more decision maker, more leadership quality, a good person. That's it. And I believe that it works in the other way also, like in terms of overconfidence or over ego, if someone has, once you get into get connected with nature, it shows you that you are nothing. Keep your ego limited and keep your confidence limited. Yes. Sorry, my video was off. Excuse me, sir. Somebody remind me to on my video. That's sorry for that. Yeah. Yes, sir. Yeah. Hello. Okay. So sorry, come again. Hello, sir. I have one question. Can I ask? Yeah, please, Komalji. Yeah, Yes, please. Komal. Hello, sir. Hello, Rakesh, sir. Hello. Sir, my name is Komal, and I am assistant professor in Gulzar Group of Institute, that is in Ludhiana, near Ludhiana, Khanna. So, sir, actually, we have a students of travel and tourism department.
तो सर उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए आपके पास जैसे लीडरशिप कैंप्स वगैरह भी, जैसे रिसेंटली वो हमारे स्टूडेंट्स लीडरशिप कैंप गए थे, दैट इज इन मनाली। सो आपके पास कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं इन स्टूडेंट्स के लिए? यस, आई डू द प्रोग्राम फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट। एक मेरा प्रोग्राम होता है, एक हिमालयन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, एंड एक प्रोग्राम होता है जो हम आपके कैंपस में या आपके आसपास में आके हम लोग उनको कर देते हैं। सो वी कीप देम रेडी फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, either they want to go for the job or want to open their startup or whatever. So we train them what is the corporate culture, how the corporate people working or how the business is working, what are the things involved in that. So it's a क्योंकि सिर्फ जाना, ट्रैकिंग कराना और आ जाना, कुछ लोग उससे समझ जाते हैं, कुछ लोग उसको फन करके आ जाते हैं, until unless we don't do the debrief of it कि इससे हमने क्या सीखा, Yes, क्या sir. समझा, कैसे करना. So that part what we do as a trainer, okay. So definitely we can do work out something in the we have a few campsites in the Himalayas as well. So it's all depend because outbound is always a costly affair. So जाना है, Yes, sir. आना है. Yes, sir. So Actually, my campus से question भी is one again, अगर हमारे स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कुछ इस तरह से प्लान अगर आपकी तरफ से हो सकता है तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ सर? आप मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सामने आ रहा है. यू जस्ट टेक ए पिक्चर ऑफ इट एंड यू Yes, जस्ट sir. आप मुझे व्हाट्सएप या इन ऑल चैनल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एवरीवेयर आई एम अवेलेबल. So we'll talk on the personal ground on that, not in this forum. So that, but yeah, definitely we can do Okay. something for the student. It will be change for them. It will be mind blowing for them because I never teach them. I just make the experience available in front of them. The experience. Oh, okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for your guidance. Seems like there is some network problem from his side. Rakesh sir. रोहित कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उधर से. Yes sir, yes sir. So okay, think we have already taken all the questions. Okay, so we will stop the session here, stop the recording. वेट कर लेते हैं सर.